हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन आरएमसी एकेडमी। आप सभी का विजन आरएमसी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। जैसे कि आप थंबनेल से देख पा रहे हो, मैंने कुछ ही दिनों पहले बायजूस का एकेडमिक स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू दिया था मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो उसी के दौरान मैंने जो पिछले कई लोगों से बात करके और यूट्यूब के कई वीडियो से जो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी थी और उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ स्टडी किया था। तो वही सारी क्वेश्चंस और मेरे भी एडिशनल कुछ क्वेश्चंस और मेरे फ्रेंड को पूछे गए कुछ क्वेश्चंस, ऐसे सब मिला के इसका कंपाइलेशन मैंने आज के इस वीडियो में डाला है। तो जो भी एकेडमिक स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं मैथ सब्जेक्ट के लिए, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप क्वेश्चंस की क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Before that, two things will be covered in the video. What are the two things? First is that all the maths questions that were asked in the interview till now will be compiled और उसका कलेक्शन इस वीडियो में है। सेकंड, दो तीन टिप्स जो है मैं खास आपके लिए देना चाहता हूँ इंटरव्यू के लिए, तो वो भी इसमें शामिल है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज सर्कम सेंटर ऑफ अ सर्कल। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यू कैन आंसर इफ यू नो, यू कैन टेल द डेफिनेशन दैट सर्कम सेंटर इज नथिंग बट इट इज द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट। सो इस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं और दिस पॉइंट is equidistant from all the vertices or three vertices of a triangle. So ये point equidistance भी होता है। Second question, it says formula for centroid of a triangle. Very simple question. You can directly tell them the formula. ये क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया था। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है सेंट्रॉइड का, तो इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। थर्ड क्वेश्चन, टेल द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ये भी काफी सिंपल है। सो यू कैन टेल द रिलेशनशिप विच इज मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट मीडियन माइनस मीन। ये भी काफ़ी सिंपल रिलेशन है। इफ यू हैपन टू सी द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, you will get this relationship between mean, median and mode. Fourth, between cube root of 2 and square root of 2, which one is greater among the two? Now this is very simple. You must know whether the cube root is greater or the square root is greater. So you must know that square root will definitely be greater than the cube root, because at the power for the square root is 1 upon 2 and the power for cube root is 1 upon 3. So definitely the square root will have the greater value. चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इट सेज डिफाइन पॉलीगॉन एंड ऑल्सो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सी दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, दे आर आस्किंग अगेन एंड अगेन। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को भी आप बता सकते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। द क्लोज्ड फिगर विच इज formed by line segments, and how many line segments? Three or more than three. So three or more than three line segments होने चाहिए और ये क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। इसको आप पॉलीगॉन कह सकते हैं। उसमें दो टाइप्स है, कॉनकेव पॉलीगॉन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। डिपेंडिंग ऑन द इंटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगॉन, it is classified as concave or convex. For example, if the angle is, even if one of the angle, interior angle of a polygon is greater than 180 degree, it is called concave polygon. Whereas if the angle
is less than 180 degree, it is called as convex polygon. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. डेफिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, वेरी सिंपल. एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट. सेकंड, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है. सेक्शन फॉर्मूला आपको बता देना है. सेक्शन फॉर्मूला इज नथिंग बट इट डिवाइड्स द लाइन इन सर्टेन रेशियो एंड उसके अगर उस पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो आप उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको रेशियो दिया गया होगा और दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे. तो आप यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला? इफ x1 and x2 y2 are the coordinates and m is to n is the ratio, then what is the section formula? It is, if you want to find out x coordinate, it is mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus my1 divided by m plus n. This will give you the coordinates of the points. चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई रूट टू इज एन इरेशनल नंबर? काफी सिंपल आंसर है. देखिए इसके रिगार्डिंग और भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. बट मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आपको जस्ट क्वेश्चंस की आइडिया दे रहा हूँ. आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन दिया है, काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो वाई रूट टू इज एन इरेशनल? सिंपल आंसर है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो इसको हम इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. x1 x2 y2 अगर ये दो कोऑर्डिनेट्स है तो इन दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है. तो व्हाट इज दैट? इट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. सो you can get the distance between those two points. Again, repeat हुआ है ये question. What is section formula? We have already seen that. Question number 12. How many rational numbers lie between root 2 and root 3? See, this question is directly from the NCRT, which says, so infinite numbers lie between root 2 and root 3. ये जैसे कि मैं बता रहा था, ये डायरेक्टली क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी के चैप्टर से. वहाँ पे एक नोट में ये दिया गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 13 क्वेश्चन. Question number 13 says, if the vertices of a triangle are given, how to find the centroid of a triangle? सी अगेन घुमा फिरा के वही क्वेश्चन, सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली पूछा गया था. क्वेश्चन 14, इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज जीरो. ये भी क्वेश्चन कई लोगों को पूछा गया है. तो इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर जीरो होता है तो इसका मतलब है all the three points are collinear. They do not form any triangle. That is why the area of triangle is zero. अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके आप देख सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में भी ये दिया है कि अगर कोऑर्डिनेट्स के यूजिंग आप फॉर्मूला यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर एरिया वो जीरो आता है तो इसका मतलब है दो पॉइंट्स आर कोलिनियर. 15th question says, what is midpoint theorem? Again related to triangle only. So midpoint theorem काफी simple है. It states, what it states? It states that the line segment connecting the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and is equal to half of the third side. Very important and very simple as well. So you can tell them the midpoint theorem. You can draw a diagram. You can take the midpoints of two sides, join them. This line segment is parallel to the third remaining side, and that
line segment is also half of the other side. Correct. Let us come to the next question, number 16. It is saying what is the perimeter of semicircle. Very simple. Perimeter of semicircle, it is pi r plus 2r. Pi r is the perimeter of semicircle, plus you have to add the 2 times the radius, or you can say diameter. Pi r plus d also is the perimeter of semicircle. Next, question number 17. It says if area and perimeter of a circle are numerically equal, then what will be the radius of the circle? Very simple. Again, you have to equate the formulas, because area and perimeter is numerically equal. So you have to find out pi r square is equal to 2 pi r. So you have to find out the radius. You can easily find out using the equation. What is the total surface area of the cone? Question number 18 says what is total surface area of the cone? So total surface area of the cone is nothing but pi rl plus pi r square. Pi r square is the area of base and pi rl is the curved surface area. So total surface area becomes pi rl plus pi r square. Question number 19 says what is HCF and LCM of two consecutive natural numbers? So very simple. For once they say consecutive natural numbers, the HCF is always 1. So the HCF is always 1, and LCM is nothing but product of the numbers. So HCF is 1 and LCM is product of those consecutive numbers. Now question number 20, ये question मुझे पूछा गया था. What will be the distance formula if one point is the origin itself? So one point is origin, that means एक point के coordinates 0 0 0 0 होंगे. Other point आपको दिया होगा, so you can use the distance formula. It is as simple as under root of x square plus y square. Very simple. Question number 21, it says formula for area of trapezium. Again, that is also simple. You can tell formula for area of trapezium, it is nothing but 1 upon 2 into sum of parallel sides of the trapezium into height. Question number 22, it says difference between centroid and orthocenter. नाउ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये भी काफी लोगों को पूछा गया है. तो सेंट्रॉइड का मतलब है इट इज अ पॉइंट वेयर थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट. मीडियंस मींस अगर हर एक साइड्स का हम मिड पॉइंट लेते हैं तो इट इज नथिंग बट अ लाइन सेगमेंट विच इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. The point at which all these three medians meet, it is nothing but the centroid of a triangle. And what is orthocenter? So orthocenter is again a point at which perpendicular of the sides meet, right? So perpendicular means what? It is a line drawn from the opposite vertex and which is perpendicular to the side which is opposite to that vertex. So ये तीन जहां पर मिलते हैं तो उसको हम ऑर्थोसेंटर बोलते हैं. Question number 23. Prove sine square A plus cos square A is equal to 1 for any angle A. Now see, this is sine square A plus cos square A. It is ये 2 जो है वो थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है, लेकिन it is sine square A plus cos square A is equal to 1 for any angle A. So you can easily prove that by taking a right angle triangle and take the ratio sine and cos and square them, and you can easily prove using that. Next, question number 24, it says what is secant of a circle? So ये भी question काफी common पूछा गया है. So secant is nothing but it is a line, and the line which is meeting the circle in two different points is nothing but the secant of a circle. Next, question number 25, it says what is difference between volume and capacity? See, again, this is directly taken from the NCRT itself, where they have given a small difference of volume and capacity. So volume is nothing but the space occupied by the solid,
whereas the capacity is actual quantity that the solid can hold is the capacity. So volume is the space occupied, whereas capacity is the actual amount or the quantity of the things that a solid can hold. Next, question 26, it says two sides of a rectangle are in the ratio 3 is to 4 and perimeter is 154. Find its length and breadth. So again, very simple. You can assume any multiple x. So you know the formula for perimeter. So you will first find equate that with the perimeter which is given 154, and easily you can find out the length and breadth. Coming back to the 27, question number 27, what is the angle of elevation based on the trigonometry? So, angle of elevation is nothing but angle between angle of sight. It is nothing but the angle of elevation is nothing but the angle between line of sight and the horizon. So, लाइन ऑफ साइट और होराइजन के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 28, दिस वाज आस्क्ड इन माय इंटरव्यू. If x square plus y square is given 61 and xy is given minus 30, you have to find x plus y. So what you will do, you will first take x plus y, square it, then expand it using identity a plus b bracket square. So you will get x square plus y square minus 2xy. So in this way, you can easily find out the x plus y by taking the square root. Question number 29, it says, how many diagonals does hexagon have? So there is a standard formula to find the number of diagonals for any polygon. It is, the formula says n into bracket n minus 3 divided by 2, where n is the number of sides. Okay, and the last question, it says find the sum of first 49 natural numbers. So ये sum आप find कर सकते हैं by using the formula of Sn, sum of n natural numbers. Correct? So friends, these are the 30 questions that you can refer to for your interview of academic specialist for the Byju's. And last जो slide है उसके वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. बस 4 टिप्स मैं देने वाला हूँ. मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट वन विल बी कॉन्फिडेंट. जो भी आपको आता है वो कॉन्फिडेंसली बोलना है. जो भी आपका नॉलेज है उनको कॉन्फिडेंटली बताना है. आपको सभी आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस उस वक्त मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सेकंड, ट्राई टू आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अगर गलत भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो नर्वस होने की कोई बात नहीं है. जो भी आता है वो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोले. मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स देने का ट्राई करें. और उसमें अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग मुझे लगी इज़, जो आप पहले इनिशियली डेमो देते हो वो डेमो काफ़ी अच्छा होना चाहिए. आपका कॉन्फिडेंस उसमें दिखना चाहिए, बिकॉज़ वेल बिगन इज़ हाफ डन. सो इस इसी के चलते इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड लक. थैंक यू. हाँ मम्मी. अरे ती बेडवर साडीची बॅग आहे त्या दिवशी दिलेली पिको करून हम्म. त्याला फोटो काढून पाठवतो का ती काटा पदराच्या साडीचा. बर बर. तो खाली आहे का? नाही नाही, इथंच आहे मी ती